हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पैलिंड्रोम पार्टिशनिंग ट्राई करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 132 एंड इट्स लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम। तो एंड वी हैव चैट जीपीटी विद अस। तो हाँ, अगर नहीं बन पाएगा तो फिर चैट जीपीटी यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमें पार्टीशन करना है एक स्ट्रिंग को एंड वी हैव टू गिव देम द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, कि उतने कट लगाने के बाद भी एवरी सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ओके, तो इसमें बेसिकली काइंड ऑफ है डीपी प्रॉब्लम ओनली, बट इसमें ये है कि लाइक आई मीन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम सर? मैक्सिमम कुड बी ऑलवेज द max would be always equal to is dot length, right? तो लेट्स से 3 है, सॉरी इट्स डॉट लेंथ -1। सो बेसिकली अगर हर जगह कट करते हैं आफ्टर ईच कैरेक्टर तब तो पैलिंड्रोम ही होगा, क्योंकि ए itself one character is a palindrome, then a is palindrome, b is palindrome, similarly a is palindrome, 2 is palindrome. So max तो हमेशा s dot length -1 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है। तो बेसिकली एट each point where we are we have two choices to make, right? और वो दो चॉइस क्या होगा कि अगर वहाँ पे हम कट लगाते हैं and the left part is a palindrome, then we can make, we have the choice. बट अगर हम कट करते हैं उसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट पार्ट पैलिंड्रोम नहीं रहता है, देन वी कांट मेक अ कट देयर, राइट? सो दैट्स द होल आइडिया। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो बेसिकली हमें ये बताए कि वेदर इफ़ वी मेक द कट वेदर वी विल गेट अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो एक बुलियन लेफ्ट इंडेक्स राइट, ठीक है। while left is smaller than right, ठीक है। if start vector at left तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली ये बस फंक्शन है जिसको कोई भी स्ट्रिंग मिलेगा और स्ट्रिंग का लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स मिलेगा, और इस स्ट्रिंग को बस इतना करना है कि बताना है, और इस फंक्शन को बस इतना करना है कि इसको बताना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट if we cut that particular string whether we will get a palindrome or not, okay? और इसके बाद left प्लस प्लस और इंटायर वाइल लूप खत्म हो गया, then we can simply return true that we got a palindrome, okay? तो ये तो पहला हो गया फंक्शन। then we need to have a helper function which we can call recursively. So our first approach would be to have a recursive solution to this problem. So string s, और हमें पता रहे कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इंडेक्स नहीं करते, डीपी वी विल से लेटर। तो if index is greater than equal to stop length, तो बेसिकली we can return, so we have to return a big number, जैसे कि इंडेक्स अब इसके बाहर चला गया, राइट? so 3, so you see maximum we can get s dot length -2 or maximum s dot length can go up to 2000.
वी कैन सिंपली रिटर्न 3000 फॉर सेफर साइड, तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा. सो इन दैट केस इट वॉन्ट बी मिनिमम, लाइक मिनिमम even if we do not get any palindrome, minimum would be 2000 in the extreme case, the edge case. Okay. तो इसलिए हमने 3000 यहाँ पे रख दिया. आप समझ रहे हो ना यहाँ तक? okay. तो अभी क्या करेंगे? Now we have to see whether we have a choice at this index or not. तो int answer अगर यहाँ पे कट लगाने पे we get a palindrome, left would be as it is and right would be the index at which we are. तो अगर ये है तो ये करना है, else ये करना है. ठीक है, और रिटर्न आंसर करना है. पहले इस बार देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कट नहीं लगा सकते, राइट, अगर कट नहीं लगा सकते, इन दैट केस वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर नेक्स्ट. so we have to return helper, yes, left will remain as it is and index +1. okay. in this case answer would be method minimum of. सो 1 एज की हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं बेसिकली. जैसे बी पर है तो ए बी को हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं. इन दैट केस अगर हम कट लगा रहे हैं तो आंसर वुड बी एक कट बढ़ जाएगा एंड देन हेल्पर स्ट्रिंग वुड रिमेन एज इट इज, लेफ्ट वुड बिकम इंडेक्स index or index +1 would be the left. so basically जिस भी पॉइंट पे हम हैं हम मान रहे हैं उसके बाद कट लगा रहे हैं, राइट. it should be index +1. and it would be index +1 and second would be helper. कट नहीं लगा रहे हैं so left will remain as it is, this will become index +1. okay. okay. रिटर्न आंसर. सो हमें लेफ्ट और राइट मिला. लेफ्ट राइट से हमने कंपेयर किया, राइट. यहाँ पर हमने ये ट्राई किया है कि मिनिमम ऑफ हेल्पर ये हम कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं हम. तो बेसिकली तो अब इंडेक्स +1 से लेके आगे तक ये देखेगा. ओके. यहाँ पर हमें ये देखना है, we are always returning 3000 because index would always go beyond इस dot length, right. but अगर left पे index +1 है so let's say if left is also greater than equal to s dot length, तो basically हमने सारा कवर कर लिया. you can just return 0. let's say फिर हम return helper string
string we would pass at which is left index would start from 0 and index would be 0. एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं. So basically 0 0 से स्टार्ट किया हमने. In this case let's say helper by if left greater than equal to start length 0 is not greater than equal to index is not greater than equal to palindrome s left index 0 0 while left is smaller than right, no, return true. Fine. So it is a palindrome. Answer equal to 1 plus helper of index plus 1 index plus 1 helper of left index plus 1. So यहाँ से 3000 रिटर्न आएगा, इधर से 0 आएगा. 1 plus 0 1. We decide to make a cut. थोड़ा problematic है यहाँ पर. So it will return 1. But if we decide not to make cut, then it would be 0 1. अभी कैसे करें इसको, थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो. Anyway, let's try to run it. It will fail for sure, but fine, at least compilation error we can see. Okay, should have one more for the class. Find wrong answer. Output 2 expected 1, output 1 expected 0. I mean, should I try subtracting 1? But I have doubt whether it will pass all the test cases. But let's see. And how many moving parts we have? Left and index, right? So we have fine. We should pass dp from here. Should we make dph? Okay, we will see if we get into TLE. I mean what I was saying कि dp को -1 से इनिशियलाइज करना चाहिए क्या. ठीक है, पैलिंड्रोम में नहीं पास करना है. dp and dp and dp. बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज कर सकते, बट दैट्स फाइन. ईच पैलिंड्रोम में बस इसको कॉल करते और इसको ऑलवेज कॉल करते और मिनिमम निकाल लेते, बट दैट्स फाइन. if dp of left index not equal to 0, रिटर्न कर देंगे dp of left and index. So fine. Let's try to submit it. So it worked.
So basically always we are making one more cut. So if we subtract one, it worked, right? So this is done. अभी इसको iterative में convert करके देखते हैं using the same technique which we used last time. तो उसमें basically we will do nothing. There is a trick taught by Striver which you can visualize if you are solving more than 10-20 questions. तो उसको try करके देखते हैं whether it would be applicable or not. So let me make a duplicate here. So duplicate में कुछ नहीं करना, ये function add ही रहेगा. In the main function till we have defined dp it will remain same. Comment out this code. Okay. यहाँ पे base conditions if left greater than start length 0, if index greater than start length return 3000. तो इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं बेस केसेस को, बट उससे पहले एक बार लेट्स मी ओके ये बेस केस को पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये बेस केस कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, for int I equal to 0 index in dp we have the second value as index, so this value can be anything. Okay, dp of I if index greater than equal to start length return 3000. Okay, greater than equal to start length. Let's make one more loop, it will run 2 times only, but that's fine. J equal to start length j smaller than equal to dp of 0 dot length j plus plus dp of I and j equal to 3000, right? That's what we want. Index is the second argument in our dp. Okay, so second argument if it is greater than equal to start length, so start length say till the end, उस वैल्यू को हमेशा हमने 3000 कर दिया for any value of I, right? So this base case is covered. The other base case is to initialize it to 0, but it doesn't matter if you see, because I mean by default any array have the value 0 only. तो ये भी done है. Okay, so we have covered base cases. So this is the base case of recursive one which we have covered in fine. Let's move to the main part. So this base condition are covered. ये condition लिखने की जरूरत नहीं होती iterative में. Okay, we have to write 2 for loops, left and index. Okay, left की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, इसकी वैल्यू भी 0 से शुरू हो रही है. So it should start from the end. Start length -1 left greater than equal to 0 left minus for int second variable is index. Index is also starting from 0, so we will just reverse it. Index equal to okay, so 2 for loops are done, and at that we have to return dp. Okay, which value 0 0 by which we started the recursive one, the same value we have to return at the end, right? So there is no use of this line anymore. Now just write the base core logic. So core logic is from here till here. Just cut it.
paste it here. Okay, and this is of no use anymore. Fine, this function is there, minimum cut. Now what? Instead of helper we have to use dp. That's it. Oh. Fine, यहाँ पर भी dp कर देते हैं अपन. Fine, I think one more mistake I have made. Helper -1, so we have to return -1. Okay, let's see. Hmm. Two 999. I equal to 0 I smaller dp dot length I plus plus for every value of I. J equal to is dot length. So here basically index greater than equal to is dot length, we are returning 3000 no matter what the value of I is, I mean the left edge. If if left equal to if left greater than equal to s dot length, we are returning 0, right? So not for all values of index greater than, if left is greater than equal to s dot length, we have to take care of this case also, right? So our base condition is not correct. Here we have to write if I greater than equal to s dot length, in this case dp of I j equal to 0, else we will see this, we will try to optimize this code. So if left greater than s dot length greater than equal to, if I greater, so instead of left we have I here. Let's try to run it now. Fine, let's try to submit it. Okay, recursive one is taking more time, same memory, a bit less memory, but anyway that's fine. Let me try to simplify this one. If I greater than equal to s dot length, so what I will do, so I will not even run because by default it will be 0 only. तो अभी उसको हटा दिया हमने. टू 2520, it increased a bit, पता नहीं क्या ही है, but anyway I think we have been able to solve it with both recursive and iterative approach.
So